मरी ले जाओ मेनू आलम जब्बा ले जाओ Kindly beta mute yourself. Okay, are you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So again, we will drive this question, how we are going to drive. So is this point clear to you? Any problem with anyone? Okay, how we are getting slope equal to 0? Yes, sir, clear. अच्छा, किसी का question हो, he can ask right now. Then we will move toward its derivation. Okay, no question. ठीक है. Okay, so in this step, एक सेकंड, ये तो वही है आपका एवरेज. So again, अब आपका slope, why we are taking slope equal to 0? Because obviously at the top of the curve, we got the same value of the y. ठीक है? So in this scenario, what would be the value of the equation? Just hold on a second, beta. In this graph, what would be the slope? Obviously, it would be equal to delta y over delta x. Since यहाँ पे हम लोग क्योंकि इन्फिनिट स्मॉल एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, so we are going to take dy over dx. So here y is p and x is v. So obviously dp over dv equal to 0. ठीक है? So this is what he has written here in this equation. Clear होगी कि y dp over dv is equal to 0. Yes, sir. Sir. किसी का क्वेश्चन? No, sir. Sir, please फिर बताइएगा. Is it clear कि slope is equal to what? Delta y over delta x in the normal scenario. When you are taking the atomic particles or dealing with the microscopic behavior, yeah, infinite small particles, you take it as a differential dp over dx, okay, or dy over dx. So here in the y-axis we got p, in the x-axis we got velocity. So the slope would be equal to dp over dv. So dp over dv will be equal to 0 at the top of this curve. ठीक हो गया? Yes, sir. Okay. So this is the why he has written dp over dv equal to 0. ठीक है? और यार फिर एंट्री हो रही है सबकी, एक सेकंड बेटा. ओके, सो अगेन क्या होगा? पीवी की वैल्यू क्या आपके पास? 4 पाई दिस वन. ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ने बताई हुई है एट द स्टार्ट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पी एंड अगेन द कांस्टेंट थिंग सिंस वी विल डिफरेंशिएट. ये देखें आप, यहाँ पे जो मजे की चीज है, जो इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, दैट इज दिस इक्वेशन. ठीक है, सो इन दिस इक्वेशन you will just put the value of the p. Okay, so you are putting the value of the p here and the variable quantities here. Okay, v square and that of exponential minus mv square over 2rt. So for the simplification, again we will assume okay, we will take this as a constant a and we will take m over 2rt as a constant. Okay, so what constant we have taken previously? We have taken a and b, so obviously we will follow the same pattern. So this 4 pi m over 2 pi rt power 3 by 2 यानी आपके पास
this one we will take it as a constant A, and m over 2RT will be as a constant B. Okay, so this equation will become something like this one: A V square e raised power minus BV square. Okay, so this question will be like this one here: A V square e raised power minus BV square. Is it clear? No, Any sir. question? Confusion? Yes, sir. Yeah. Sir, kindly बता दें. अच्छा, क्या लिया हमने? P की वैल्यू ली है, so just we have taken the constant A here. ठीक है, this one will be equal to A. एक सेकंड बेटा, this one is equal to A, and this equation m over 2RT will be equal to B here. So this equation will become A V square e raised power minus B V square. ठीक है, so if we will see के in the next step, just क्या किया हमने कि ये equation ऐसे बना ली है. ठीक है, ये constant दिया है ये भी, और this PV is equal to this one. Clear हो गया? Yes, sir. ये क्वेश्चन लिख जी सकते हैं सर, क्लियर है. ठीक है. अच्छा, then we will differentiate it with respect to V. So when we will differentiate it with respect to V, so what we will get here, dP over dV, so we have differentiated both sides with respect to a velocity, so the equation obviously differentiated. ठीक है, so when we will differentiate it, क्या होगा, we will use the law of differentiation here. ठीक है, this would be the law which we use here. At the end result, at the end what we will get this thing here. ठीक है, ये सिंपल अलजेब्रा है जो आपने किया है, जस्ट फ्री कैलकुलेशंस किए हैं और डिफरेंशिएशन के लॉ लगाए हैं आपने. ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा. ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई ना कि क्या करना है आपने? Yes, sir. Sir, क्या कहते हैं? Yes, sir. Easy है product to लगाए derivative नहीं का. समझ रही. डेरिवेशन का तो आपको पता है ना, डेरिवेटिव लॉ क्या होता है, प्रोडक्टिव का और जी, सर. एक्सपोनेंशियल का. Yes, sir. बेटा स्ट्रेंथ तो अभी मेरे पास नहीं है. ठीक है, सर आपका माइक म्यूट हो गया. ओके. अच्छा, जस्ट बेटा डेरिवेशन का लॉ यूज किया हमने. वी हैव जस्ट यूज्ड द डेरिवेटिव लॉ हियर फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. सो जस्ट आई हैव टेकन क्या डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू v ली है, a v स्क्वायर d ओवर dv into a raised power minus bv स्क्वायर. जब आपने उसको किया है तो आपके पास जो टर्म आई है दैट वुड बी इक्वल टू दिस वन. ठीक है, और देन इन द सेम वे आपने क्या किया कि इसको आपने बाहर ले लिया, देन यू हैव ड्राइव d by dv av स्क्वायर, और उसकी टर्म जो आपके पास आ गई है वो ये आ गई है. जस्ट आपने रीअरेंज किया तो एंड रिजल्ट आपके पास ये Yes, आ sir. गया. ठीक है, क्लियर है? जी. सिंपल अलजेब्रा है और कुछ भी नहीं है बेटा. देन अब हमें पता है कि dp ओवर dv किसके बराबर होता है, 0 होता है. सो आई विल, इस स्लोप के मुताबिक क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. सो आई
जस्ट क्या किया आप, मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया है, ठीक है। इन दी नेक्स्ट स्टेप 0 किया है, इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आई है, v स्क्वायर 1/b के, और देन आई जस्ट यूज द वैल्यू ऑफ द b। तो b मैंने किसके बराबर रखा था, m/2 RT के। तो इक्वेशन वुड बी लाइक दिस वन। सो आपके पास जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी वो ये होगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2RT/m है, और यहाँ पे भी आपके पास 2RT/m। सो इज इट क्लियर नाउ? इससे पहले वाला दी होल डेरिवेशन। इससे पहले वाला पेज दिखाइएगा बेटा ये चीज यस तो क्लियर हो गया बेटा? किसी का क्वेश्चन बेटा अप टू दिस पॉइंट? सर लास्ट वाला पेज दिखा। सर इससे पिछला वाला। थैंक यू सर। ठीक है, एनी अदर? ये बेटा मैं शेयर भी कर दूंगा ऑन दी, कह लें कि आपके जो MS टीम Teams। पे, ठीक है। और देन जो है कोई क्वेश्चन हुआ आप मजीद पूछ लीजिएगा। आई डोंट थिंक सो दैट यू विल गेट एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कैलकुलेशन बिकॉज इट इज सिंपल अलजेब्रा है, ठीक है। सो आई थिंक फॉर टुडे इट इज एनफ, यस ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है इसकी 2 केसेस हम लोग स्टडी कर लेंगे कि how we can apply the speed distribution in the rain and that of the sunshine. Or then we will do certain examples which we missed previously, and then afterward we will study about the molar specific heat of an ideal gas, ठीक है, और at constant pressure and constant volume के ऊपर। Then we will end this chapter। ठीक हो गया? तो आज के लिए काफी है बेटा, फिर आप लोग चिल करें, फिर इंशाल्लाह बेटा मंडे को आपसे मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम सर। सर रोल नंबर 55 की ना अटेंडेंस लगा दें, उसका नेट का प्रॉब्लम था। सर रोल नंबर 24 और 30 की भी लगा दें, उनका काफी नेट का प्रॉब्लम है। चले बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, फिर ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।